Hello everyone, welcome to PT Reading Filling the Blanks Real Exam Question Series, and this is 50th video in this series. We and you together have come this far that we have discussed 50 videos or 49 videos related to reading filling the blanks, the real exam questions which have come to students in their exams. We have discussed the strategies, the tips and tricks, how to solve them. So let's get started. So now you know that PT is accepted in UK for study, work or settlement purposes, and 90% of universities in Canada now accept PT academic. And my name is Bhrat Brij. I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PT, and this is my scorecard. Now, question students ask is, can we also score? The big answer is big yes. You can also achieve your target score in your next attempt अगर आप सेम स्ट्रैटेजीज टिप्स एंड हैक्स फॉलो करोगे जो हम आपको इस वीडियो सीरीज में बताते हैं या फिर वी टीच इन आवर लेक्चर्स इन इंस्टीट्यूट और ऑनलाइन कोचिंग, then you can easily achieve your target score in your next attempt. Okay, so that's why do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. Now PT reading, it is of 32 to 41 minutes. Yes, it is integrated timer, so time management आपको खुद करनी होती है. It is not scored out of 90, it is scored out of 47 marks, and it has 5 question types, and the second last question type, which is reading filling the blanks, is of the most importance. Okay, and this is the real PT reading scoring. As you can see, the reading module is just contributing 47 marks, and today's topic, reading filling the blanks, contributes 15 marks in that. So it means that if you are getting 5 reading filling the blanks, they will be of 3 marks each. Very important, right? Whatever your target score is, 58 hai, 65, 66 hai, 79 hai, you have to make sure that you are achieving your target score. Okay, and reading filling the blank strategy. What is the strategy for reading filling the blanks? You cannot spend more than 2 to 2.5 minutes on solving one blank. अब उसमें क्या आप सारे words पढ़ सकते हो, meaning समझ सकते हो in 2 to 2.5 minutes में? The answer is probably no. So what you need to do is you need to do the skimming, and in our institute we teach our students, or in online coaching we teach our students how to do the skimming. And this is today's topic, and as usual I'm going to give you 30 seconds to go through this, and then we are going to discuss it. Okay, so now you know the first thing we do is we do the skimming part. Why we skim? To understand the gist, for its tense, tone, right? Gist is central idea, overall idea. Tenses, you get to know it's using past tense, present tense or future tense, right? And then tone, it we get to know if it's positive, negative or neutral. Okay, so let's get started. Decision making is central to the management of an enterprise. The manager of profit making business has to decide on the manner of implementation of the objectives of the business, at least one of which may relate to allocating resources to maximize something. A non-profit making enterprise will be making decision on resource allocation so as to be economical, efficient and effective in its something of finance. All organizations, private sector decisions have financial implications. Decisions will be about resources, long-term, short-term investment. Decision will also be about activities and how to undertake them. Most decisions will at some stage involve consideration of financial matters, cost. Okay, so this is about decision making कि public sector कैसे decide करता है, private sector कैसे decide करता है. Okay, I have put 2 star marks over here because I want to tell you an important rule of grammar, which is here: when 2 or more words act as a single adjective, they are combined using hyphen. So यहाँ पे profit making business, अब profit making क्या है? Business का आपका adjective है, so that's why it's used with a hyphen. और non profit making enterprise, यहाँ पे भी आपके
देखिए 3 वर्ड्स हैं, सिंगल एडजेक्टिव यूज हो रहा है, सो देयर आर 2 hyphens. Okay, so now second thing we have to do is we have to do the parts of speech classification of the options. Okay, कि आपको पता होने चाहिए, and we teach in detail to our students how to correlate, how to check the parts of speech. So stand is your verb. Well is also your verb, like very well, I'm well, like that. use भी आप एक तरह से verb लगा सकते हो. Take verb, particularly ly लगा हुआ है या तो adverb हो सकता है, and you know that साथ में ये क्या होगा, हमारा sign posting word हो सकता है. अंडरटेक, किसी चीज को अंडरटेक करना, वर्ब. एलोकेट, प्रॉफिट एलोकेट करना, रिसोर्सेज एलोकेट करना, वर्ब. प्रॉफिट इज योर noun. Okay, so what we have done is we have done the parts of speech classification. अब हमें क्या करना होगा, first we simply apply the grammar rules. So यहाँ पे आपको वो grammar rule apply करना है. may dash relate to. अब आपको पता है may क्या है. may आपका एक मॉडल है, राइट. मॉडल के साथ आगे क्या यूज होता है, verb. और verb की कौन सी यूज होती है, फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. इन दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, अब हम बाकी जैसे नाउन्स हैं उनको एलिमिनेट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली को एलिमिनेट कर सकते हैं, एंड मोर और लेस ऑल दीज वर्ड्स आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. सो अब रिलेट करना है, मे वेल रिलेट टू. ओके, यहाँ पे आंसर क्या होगा, वेल, मे वेल रिलेट टू. ओके, दिस इज हाउ वी से. ओके, आई होप दिस इज क्लियर. मैक्सिमाइज क्या है, मैक्सिमाइज आपका एक एडजेक्टिव है. अगेन ग्रामर रूल. सी, वी आर नॉट रीडिंग इट, वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द थिंग्स विद आर ग्रामर रूल्स. अब एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद क्या यूज होता है, नाउन. अब हमारे पास सिर्फ एक ही नाउन है, सिंपल. पढ़ने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं, एक सिंपल सी बात है. एडजेक्टिव के बाद आपका नाउन यूज होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ओके, अब नेक्स्ट, इन इट्स डैश ऑफ फाइनेंस. ओके, अब वहां पे क्या बात हो रही है, नॉन प्रॉफिट एंटरप्राइज एंड अफेक्टिव इन इट्स फाइनेंस. फाइनेंस को वो क्या करेगा. ओके, अब एक सिंपल सी बात है, इन इट्स यूज, दिस इज योर कंटेक्चुअल आंसर. ओके, इन इट्स use of finance, so that's why you are going to put use over here. So अब decisions हैं, decisions क्या होते हैं, collocation क्या होगी, you टेक डिसीजंस. जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, व्हाट यू कैन डू, अगर कंफ्यूजन है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन को यूज़ करिए. स्टैंड डिसीजंस कोई सेंस नहीं बनाएगा, राइट. टेक डिसीजंस यस सेंस बनाएगा, पर्टिकुलरली डिसीजंस नहीं सेंस बनाता, अंडरटेक डिसीजंस भी नहीं होता है, एलोकेट तो डिसीजंस होते नहीं हैं, रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं. ओके, सो दैट्स वाई इट्स गोइंग टू बी टेक डिसीजंस. एंड नाउ द लास्ट प्लांट. अब आपको क्या इतने सारे वर्ड्स पढ़ने की ज़रूरत है, मे बी द आंसर इज नो, बिकॉज वट वी डू, वी रीड 4-5 वर्ड्स बिफोर द ब्लैंक और 4-5 वर्ड्स आफ्टर द ब्लैंक. सो इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स डैश कॉस्ट. कॉस्ट से पहले अब आप यहाँ पे देखिए क्या है, कॉमा है, हमारा ग्रामर रूल अप्लाई होगा. कौन सा ग्रामर रूल, साइन पोस्टिंग वर्ड्स. अब आपको पता है कॉमा के बाद अप्रॉक्सीमेटली जैसे ही ब्लैंक आता है या ब्लैंक के बाद कॉमा आता है, 99% हमारे साइन पोस्टिंग वर्ड्स यूज होते हैं. और इसमें से हमारे पास साइन पोस्टिंग वर्ड्स कौन सा है, सिर्फ एक. कौन सा है, पर्टिकुलरली. सो वी आर गोइंग टू यूज दिस साइन पोस्टिंग वर्ड एंड वी आर गोइंग टू write it like particularly cost. Now let's see if all the answers are correct or not. Yes, all the answers are correct. So you see, if you follow our strategies correctly, you will be able to score your marks. You will be able to achieve your target score. What is our strategy? Our strategy is based on context, lexical resource and grammar. Context mein skimming, you have seen how we do skimming, forward reading, backward reading, tone analysis. Lexical resource में it's about collocations. You have seen how important collocations are. जैसे take decision एक collocation है, so that's why we said that it will be take decision. Phrasal verbs and vocabulary is something which we build slowly and steadily. For grammar, we have a complete grammar course. So यहाँ पे which we teach to our students parts of speech, then subject verb agreement, prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, British English rules and sentences. All this is our part of our
grammar course. But remember, you have 2 or 2.5 minutes only to solve your reading filling the blanks. Now, in that first 30 to 60 seconds, what you need to do, you have to skim the content, you have to do the parts of speech classification, and in next 90 to 120 seconds, you have to apply process of elimination, use our strategies to solve them. And all the strategies which we teach to our students are validated and proven strategies. The proof is in the ticker below. You can see how many students have achieved their target score recently, and these are some of our recent success stories where students have scored 90, 87, 86, 82 and 81. So if these guys can score, you can also score. If you have any questions or doubts, or if you want to take in-institute or online coaching, you can WhatsApp us at 8699121121. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.